हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन हाय, माय नेम इज़ मनीषा और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल ग्लैम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि ये वाला जो मेकअप लुक है मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड ऑल्सो आप मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So I'm starting with my skincare as usual. I'm using the Make More Balancing cream. Then I'm using this Too Faced Hangover primer. Such an amazing primer, and it smells like coconut. Really love it. Next I'll be using the MAC strobe cream just to give my skin really nice shine and glow. I'm starting with my eyes, और concealer के लिए I'm using the Tarte concealer in the shade light medium as my base. आई शेडो पैलेट के लिए मैं यहाँ पे जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। लास्टली मैं यहाँ पे अपने लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ शॉपरेल का ये जेल आई शेडो। उन्होंने 6 डिफरेंट शेड में इसको लॉन्च किया है। शेड का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। For foundation today I'm mixing the Estee Lauder Longwear foundation with my MAC strobe cream. This gives me really nice shiny dewy effect which I absolutely love. Especially party functions के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है and it looks really nice. So मैं यहाँ पे contouring के लिए एक liquid contour यूज़ कर रही हूँ and I'm going to blend it first and बाद में मैं इसको एक पाउडर कॉन्टूर से सेट करूँगी. So firstly I'm blending this out. Next I'll be moving on to my cream blush. For that I'm going to use this Huda Beauty lipstick in the shade Icon. Really beautiful pretty shade. टू हाईलाइट माई अंडर आईज और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का कंसीलर. दिस इज़ अगेन द लॉन्ग वेयरिंग 24-hour कंसीलर. सच ब्यूटिफुल फॉर्मूला, यू गाइज एब्सोल्युटली लव इट. Next I'm using this Kat Von D palette to set my concealer and also my contour.
Next, I'm using this Morphe blush palette. अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड्स आपको इस पैलेट में हर एक शेड मिल जाता है विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. नेक्स्ट आई एम फिक्सिंग माई बेस विद दिस मैक फिक्स प्लस और उसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना हाइलाइटर. फॉर हाइलाइटर टुडे आई एम यूजिंग दिस Ferrero highlighter, such amazing highlighter, you guys can see it has a really nice golden champagne sheen to it. ब्राउज़ के लिए मैं खाली यूज़ करी हूँ यहाँ पे एनास्टेसिया का ब्राउ फ्रीज एज यू गाइस कैन सी. नेक्स्ट मैं मूव ऑन करूँगी मेरे लोअर लैश लाइन की तरफ. आई एम यूजिंग दिस काजल फ्रॉम फॉरएवर 52 ब्राउन काजल टू बी प्रिसाइज्ड. फॉर लिप्स टुडे मैं पहले यूज़ कर रही हूँ मैक का लिप लाइनर इन द शेड महगनी एंड उसके बाद आई एम यूजिंग द हुडा ब्यूटी लिपस्टिक इन द शेड आइकॉन. So that's all for today's video. I really hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे then don't forget to like, comment and share this video. I'll see you guys in my next one. Till then, bye, take care. I love you guys so much.